Good evening. We are going to be doing coordination compounds आज. Coordination generally कुछ students को इससे बहुत डर लगता है और कुछ students को बहुत ज़्यादा simple लगता है. So they are polar opposite things. Which one do you fall in? Or maybe you're somewhere in between. देखिए, coordination as a chapter थोड़ा intimidating बना देते हैं कोचिंग के लोग, बट इतना intimidating है नहीं. Look, 20 साल पहले जेई में अलग चीजें पूछी जाती थी, आजकल अलग चीजें पूछी जाती हैं. आई नो फॉर अ फैक्ट कि पूरा आइसोमेरिज्म जबरदस्ती आपको पढ़ाया जाता है, स्पेशली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे ही 5-6 क्लास हो जाती है, ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पे. बट इस चीज पे सवाल तो आते ही नहीं है, एटलीस्ट जेई मेन में. जेई एडवांस में हमेशा आते हैं, ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर गोल है, अगर आपका गोल है जेई एडवांस, देन आप पूरा डिटेल में ये चैप्टर थोड़ा भारी है. वेल, अगर जेई एडवांस फोकस है तो सारे चैप्टर भारी हैं, बट अदरवाइज आई थिंक ये चैप्टर काफी डुएबल है. आपको बस डीएनएफ ब्लॉक पढ़ना है, थोड़ा बहुत रेडॉक्स पढ़ना है, एंड यू आर सॉर्टेड. खैर, और ऑब्वियसली केमिकल बॉन्डिंग तो है ही सब पूरे इनऑर्गेनिक का बेसिस. शुरू करें हम लोग. एज ऑलवेज हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे, एंड दिस इज मोर और लेस एनसीईआरटी में चीजें वही चीजें पूछी जाती है. एक दो चीज जो है एक्सेप्शंस होती हैं जो केमिस्ट्री में, दोज आर आल्सो पॉइंटेड आउट एंड आस्क्ड एट टाइम्स. तो आप देखेंगे कि जेई मेन में भी क्वेश्चंस आर वेरी डुएबल इफ यू जस्ट डू दीस थिंग्स. आइसोमेरिज्म पूछा जाता है, बट ज्योमेट्रिकल वाली चीज थोड़ी कम पूछी जाती है. खैर, कैन यू हियर मी राइट नाउ? आवाज आ रही है? आर यू एबल टू सी मी? What's happening on that front? Hey Shanawaz, what's happening? Blur. Okay, we'll fix that. Don't worry about that. Cool. Let's fix that. Thank you for that. Rek, Yuvraj, how you doing? How you doing? Gaurav, what's up? So you're able to hear me and see me, right? All that's good. So what are we doing? We are right here, coordination compounds. By the way, we have an awesome course for you starting on the 15th, right? JEE ki tayari, etc., etc. 5 days, 5 classes. I'm going to be doing physical and organic as usual over there. Nitika is going to be doing organic chemistry. So if you want to get it, description में links है, you can get it. This is a paid program. You get access to the app in its entirety जब तक आपका exam होता है. And yeah, literally everything on the app is accessible. You'll have a lot of questions after every session. You'll have like a lot of questions practice और end में बहुत ढेर सारे आपको सवाल देंगे. The best part, you can interact with us directly. YouTube में यही एक चीज है ना कि आप बात नहीं कर सकते. You can chat, but you can't talk to me. You can't put your video on. You can do that there. So yeah, we've got all of these things. Check it out at shop.byju's.com. I'll give you the link if you like. This slide has everything in short that's there. इसके अलावा, what is also interesting is, oh, we're gonna have to move to the other side, right? Okay, no sliding this time. Sliding without any issues. Okay. Mock test. कल है ये. अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो क्यों नहीं किया है? This is completely free. You know where you are at, right? 7th Jan is tomorrow. That's when the mock test is at. जेई आपको मालूम है कब है, पहला अटेम्प्ट. अगर आप पहला अटेम्प्ट नहीं दे रहे, दूसरा दे रहे, ठीक है. Either way, this is anyway going to be helpful, right? You know how Aakash के mock tests are like. You have tens of thousands of people writing it. It's going to be really beneficial to you. And top 50 students get complimentary ranker test series all the way to the second attempt as well as JEE Advanced. Check this out. Khair, let us get started with today's session. एनसीईआरटी खोली है? नहीं खोली है तो प्लीज खोल लो. That's what we're going to do first. Oops. और ये, yes, more promos. इतने ढेर सारे promos. This is the usual stuff, guys. These are all the videos that I work on in general. Okay, coordination compounds. Let's do this. Time was not 6:30. Oh, that's a good point, Yuvraj. Time was 6:30. Time was 6:30. You know what? I think I got confused and started the class a little early. Let me tell my good friends over on Telegram ki, hey, we've started the class a little early. Yeah, I was wondering if I did something funny, and I did do something funny. We started the class a little early. It's okay. Sometimes it's good to be early. Hold on. Let me leave a message on the Telegram channel telling our good friends here कि भाई आ जाओ, already class शुरू हो गई है. Hold on. Doing this live on this thing. Hey, so guess what? The class has already started. Please come and join us. Yeah, and in excitement, I guess time 6:30 बजे 6 बजे हो गया. So if you're free, come on right now. A lot of your friends are already on the chat. Yeah, see you. Oh wait, can I show you that? Yeah. Thanks for that. 6:30 बजे class हो रही थी. When has that ever happened, right? Last was half an hour early. Yeah. Usually on the NEET channel, I take 6 o'clock sessions. So I don't know. आज मेरा brain was just wired to go live at 6. खैर, चलो. What are we doing on coordination compounds? See, Werner भाई साहब की कुछ थियरियां थी, and out of this, and this is something that there's a bit of a controversy on at times, right? Werner भाई साहब ने क्या बोला?
वर्नर ने बोला कि प्राइमरी वैलेंस इज नॉर्मली आयनाइजेबल एंड सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस. नाउ JEE maybe I saw that last year there was a question on this, right? And JEE भाई साहब ने भी बोला कि look, this is just the oxidation number. Primary valency is same as oxidation number. Well, but that's not what Werner said. Werner did not say that, right? If you're talking about Werner specifically, Werner भाई साहब ने बोला कि ionizable valency ही होती है. तो it's okay. Maybe you lose marks in JEE, but such एक ही होता है. But if you want to make sure you get marks in JEE, maybe write whatever JEE wants you to write. But सच क्या है वो भी आपको बता चुका हूँ. We also did a short on this, which थोड़ा सा feel like, oh no, primary valency मतलब हमेशा ये होता है. यार थ्योरी थी 1800 की, वो बदल थोड़ी जाएगा 200 साल में. वो ठीक है, our definition changes. And in fact, to be honest, पूरा the whole Werner concept itself is not really applicable right now. So if you go about नहीं थोड़ा चीजें बदल गई है, things are completely different right now as compared to this. But ठीक है, NCERT में तो हम लोग कर रहे हैं. Hey Shlok, yeah. In my excitement of taking class with you guys, I just started it up at 6 o'clock instead of 6:30. Honestly, yeah, that's what just happened. Usually I take 6 o'clock classes in NEET, and my brain was just wired to start at 6. So we started at 6. And I left a message on the Telegram thing also telling them that, hey, गलती से क्लास 6 बजे, गलती से नहीं, खुशी की बात है, क्लास जो है 6 बजे होगी. Let me just tell these guys here. Yeah, all right, cool. Good evening. What's up? So what is next in this whole thing? So Werner's theory पे सवाल JEE मेन में तो कम आते हैं. नीट में तो मैंने बहुत सवाल देखे हैं Werner's theory पे. JEE मेन में कम आते हैं इसके सवाल. But some definitions are important, right? What is the ligand? What is the central atom? And all of these things. So the first thing that I think is relevant is this chap right here, right? There are some of these, especially I think JEE में सिर्फ इन्हीं दोनों पे 5 में सवाल आए थे. NO2, nitrito N, nitrito O, right? That's what it's called. Nitrito O, nitrito N. Yeah, nitro is a common name. You know how this works, right? Thiocyano, cyano. मतलब कि अलग अलग जगह है जहां से इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कर सकते हैं बॉन्ड्स विद दिस मेटल एंड लिगैंड का जो बॉम्ब है, बॉन्ड नॉट बॉम्ब, सॉरी. लेट्स गो. या यू आर हैविंग टी युवराज, सॉरी टू इंटरप्ट. नहीं यार, फ्लेक्स क्या करने की बात है. So you know what happened about the iPhone? That's an interesting question chat pointed out. We can do a bit of time pass because we are a little early, right? So when I was in Bombay back in 2014, that was the first time I got the iPhone. Because I don't know what happened in India. Tab 4G phones were like a thing, and then once you get it, then you know how the middle class mentality is like, right? EMI पे लेंगे but लेंगे iPhone. वही चीज है. Flex करने क्या है. खैर, let's talk about what is important here, right? Nitrito or SCN, thiocyanate, right? Here you can form different atoms can form ligand metal bonds, and this is interesting, right? Keep this in mind. इससे सवाल आते हैं बार बार. आपके शिफ्ट में नहीं आया तो आपके दोस्त में शिफ्ट में इस पे सवाल आएंगे for sure. This is called linkage isomerism. We'll look at it when we come to that. There are some definitions of all of these things. Now ये सब चीजें again is an extension of what we've done in bonding. आप मेरे सर के just exactly जो ऊपर चीजें हैं. सिद्धांत को पढ़ना है कि टाइम पास करना है? थोड़ा टाइम पास किया, ठीक है, कर लिया. अभी पढ़ना है तो let's focus on this. Yeah, you're doing physics and somehow you also thought that the class was at 6. वाह रेक, देखो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई. रेक, युवराज, I don't know how you guys decided to come earlier, but good to have you here. Ansh, what's up? Good evening. I know Ansh, I remember. Khair, here is this, right? All of these guys, all of these are extension of what you've learned in bonding. Yeah, shape of molecules, all of this कुछ नया नहीं है. Oxidation number of central atom, this is cool, right? And oh, इसके ऊपर एक और चीज है. Another thing that JEE sometimes asks you, but वो चीज इतनी सही नहीं है. We'll talk about that very quickly. जब I think हम लोगों ने इसकी बात की थी. Do you remember that? When we did practical chemistry, I spoke about. We'll talk about that. आगे बात करते हैं. उसके आगे बात करते हैं. What is homoleptic and heteroleptic? In NEET इस पे डायरेक्टली सवाल आया था, right? Homoleptic के बारे में कुछ. But in JEE, you need to know what the word homoleptic means, because इस पे डायरेक्टली सवाल नहीं आएगा. But इसको यूज करके, homo और heteroleptic यूज करके, you should be able to deduce things out. I've got all of these kind of questions in the repository today. खैर, nomenclature के बारे में JEE में सवाल कम आते हैं, but अगर आ गया तो भाई rules हैं, पढ़ लो, right? This is very similar to your usual nomenclature that you have in organic chemistry, but a little bit different, right? You have these weird names: aqua, amine, carbonyl, nitrosyl, etc. So, खैर, won't go into this with detail. मैंने recently इस पे सवाल तो नहीं देखे हैं, but if you should get good practice on this anyway. Who knows? Yeah, maybe because syllabus बदल गया है, maybe coordination में एक के बजाय 2 सवाल आ जाए. अगर दूसरा सवाल आए तो they will जबरदस्ती ask you this, right? So check कर लो. So practice all of these out. That will be good for you. That will definitely help you. Isomerism.
Isomerism. This is the part that a lot of you are scared of. Shlok was telling me and the other people saying, यार isomerism में कभी याद नहीं रहता है कि लिंकेज यहाँ पे होगा वहां पे हो क्या होगा. ठीक है, ये वाले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आर ऑल चिल, राइट. लिंकेज का क्या है, वही SCN CNS. कोऑर्डिनेशन इज अंदर बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के. सॉल्वेंट मतलब पानी है कि नहीं है, कलर बदल जाता है. आयनाइजेशन मतलब कि आयनाइजेशन वाला क्या है, ये याद आ रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन? अच्छा, कोऑर्डिनेशन मतलब कि पूरा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होते हैं. आयोनाइजेशन मतलब कि एक ही यहाँ पे एक बाहर आ गया, से लाइक Cl is out here, Br is inside and vice versa, बाहर निकल जाते हैं. We'll look at all these examples. Stereoisomerism, we'll spend a little bit of time on this one. And अगर आप इसमें आपको डर लगता है for whatever reason, check out the session I have done on stereoisomerism in organic chemistry. इस चैनल पे नीट पे किया है, but that'll help you with this as well because यहाँ पे बस stereoisomerism, right, cis trans and all that. The only way this is different यहाँ पे थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं जब यहाँ पे आपके पास आते हैं chelated things, right? When you have chelation happening, chelation, whatever you want to call it, right? Chelation is how I pronounce it, you pronounce it whatever how you like. इस चीज पे सवाल JEE एडवांस में बहुत बार आते हैं, ठीक है, कि कितने आइसोमर्स होंगे. You have M, A, B, C, D types, etc. बहुत चीजें होती है, right? Here, यहाँ पे थोड़ी सी NCERT में थोड़ी हिंट दिया हुआ है, and there's also the concept of FAC and MER and all of this. तो JEE एडवांस की जब हम लोग करेंगे सेशन, we'll talk about this in detail. आज maybe not so much, yeah, we'll stick to whatever we have. मैसेज देखिए, that's good श्लोक. All right, cool. All right. ठीक है, थोड़ी हिंदी में बोलूं? श्योर, थैंक्स ओनली गेमिंग साहब, थोड़ी हिंदी में बोलेंगे, जरूर. स्टीरियो एंड ऑप्टिकल, ठीक है. एनसीईआरटी से बनेगा क्वेश्चन. JEE मेन में, हाँ, JEE एडवांस में मुश्किल है यार. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू. AI, अच्छा यहाँ पे दूसरा है, नीट में एक और AI था, उसका नाम पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था. JEE मेंस, हाँ, वही फोकस है वो वेदांत. मेरा भी वही फोकस JEE मेन ही है. JEE मेन तो अभी आएगा कितने दिन में, डराओ नहीं ना, कुछ दिन में आ जाएगा, उसी हम लोग फोकस है. JEE एडवांस फोकस अभी नहीं है. बट अगर आपका फोकस JEE एडवांस है तो प्लीज पिक आउट दिस ब्यूटीफुल बुक JD Lee. I keep flexing on this. This is what the real flex is, right? Oops, sorry about that weird thing. But you gotta read this, okay, to do well in JEE advanced. Because अगर आप कोचिंग की तरफ से करोगे ना, it gets too muggy. कोचिंग बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं, बट यार देखो, उनके पास टाइम इतना ही है. Maybe some of you are focusing advanced, but in a class 40 students हैं, all of them are not focusing on advanced, right? So they have to teach in a way to make figure them. तो आप खुद ही बुक से पढ़िए तो बेस्ट होगा. JEE Lee is a very good book for you to figure out all of this. खैर, हम लोग उसकी बात बाद में करेंगे, एडवांस की बात. यहाँ पे the concept of optical isomerism also is there. सेम चीज, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के भी चांसेस है. अगेन, इफ यू आर नॉट श्योर, चेक आउट माय सेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म. दे आर ऑल ऑन दिस गाय राइट हियर. या स्टीरियो आइसोमेरिज्म इस पे है. होल्ड ऑन, आई जस्ट गिव यू दैट लिंक डायरेक्टली स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, बार-बार इसके बजाय. तो आई नो ऑल्दो ये है क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक का, बट इट्स गोना हेल्प यू इन केमिकल बॉन्डिंग एज वेल. या इट्स द आइडियाज आर प्रीटी मच द सेम, नॉट वेरी डिफरेंट. ओह होल्ड ऑन, हम लोग कहाँ देख रहे थे? ओवर हियर. ओके, स्वीट. 18 दिन युवराज, काउंटडाउन शुरू हो गया. साइफर प्रणाम. ओके, प्रैक्टिस सफिशिएंट एडवांस्ड, नो नीड ऑफ थ्योरी बुक्स. AI, तो आप होंगे मेधावी बच्चे. अगर आप बिना बुक के कोई कर रहे हैं JEE एडवांस, देन यू आर अ टॉपर ब्रो. आई डोंट नो अ सिंगल पर्सन जिसने बिना बुक पढ़े एडवांस क्लियर किया. मैं, बट मे बी आई हैव नॉट एनकाउंटर्ड ग्रेट सोल्स लाइक यू. ठीक है, खैर, these definitions will get you easy marks, so please go through them. This is the same, मैं नीट में भी यही बोला था, JEE में भी यही, चैनल पे भी यही बोल रहा हूँ. ये definitions प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए, प्लीज डोंट मिक्स them up. ये जो अंग्रेजी है, this itself tells you what it is. The only time I got a little confused was ionization और coordination बीच में क्या फर्क होता है. Coordination मतलब coordination sphere itself, ठीक है, और ionization मतलब कि sphere के बाहर जो बाहर आयन है वही लिगैंड बन सकता है, जो काउंटर आयन है वही लिगैंड बन सकता है, which is this example right here. सॉल्वेट में भी कलर बदल सकता है. VBT का कॉन्सेप्ट इज इंटरेस्टिंग, बट इट डजंट एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. देयर इज इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इनर ऑर्बिटल मतलब लो स्पिन होगा, आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन होगा, एटसेट्रा, वो सब चीजें हैं. बट द थिंग्स दैट दिस कैन नॉट एक्सप्लेन इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ CFT, व्हिच वी विल गेट टू. ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सेम एज बिफोर. अगर लोन पेयर्स हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन एग्जिस्ट. एंड यही फॉर्मूला सेम यूज होगा जो DNF ब्लॉक से. सो कोऑर्डिनेशन करने के लिए DNF ब्लॉक करना आई थिंक इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके, खैर, व्हाट्स इन CFT, दैट्स इंपॉर्टेंट. CFT में यही पूरा है. डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल्स, राइट, थिंग्स चेंज. देयर इज अ स्प्लिटिंग दैट हैपेंस एंड दैट्स मेनली बिकॉज़ ज्योमेट्री. ये NCERT में ही लिखा है, कोई बड़ी चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट रीड दिस. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस,
check our videos out. We have done a lot of theory on this channel itself on coordination. You can check that out. But the general idea is there is a splitting, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, इसलिए above Barry center is plus 3.5, negative 2.5. What is Barry center? वो सब क्या है? Book, JEE, पढ़िए, ठीक है? If you want to know more details about this, splitting क्यों होता है, क्या होता है, etc., etc. But again, these ideas are a little outdated, but we're studying basics, so we will go through this. The main thing that this guy, I mean, the whole CFT spoke of is that there are weak field and strong field ligands. Strong field ligands force pairing. Weak field ligands don't force pairing. So usually high spin ये होता है और ये low spin होता है. Now where are the exceptions? Exceptions है आपके 5D वाले compounds, yeah, compound made by 5D elements, platinum, etc. Also कुछ ligands जो है ठीक से behave नहीं करते हैं. कुछ metals are like very high charge, तो like भाई Z effective बहुत high है तो you know they cause a different sort of a behavior. You know this, right? Cobalt 3 plus, etc. वो सब exceptions है. But the main thing that you need to know from NCERT is this thing of delta naught and P. ये जो था delta naught is the splitting energy and P is pairing energy. So अगर pairing energy ज्यादा है than delta naught, then what happens? Then obviously ये configuration ऐसा होगा कि no pairing will happen. Whatever is lower is what will happen. यहाँ पे same idea as before everywhere else in chemistry. जहाँ पे energy कम है वो अच्छी बात है. तो अगर pairing energy is lower than delta naught, then pairing will happen. Okay. कभी कभी स्टूडेंट्स इसका भी यार मैसअप कर जाते हैं. कोऑर्डिनेशन में यू विल गेट 4 स्टेटमेंट्स, मार्क इसमें से कितने हैं सही, न्यूमेरिकल एंट्री ऐसे सवाल आ सकता है, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ओके, अगर आप किसी नोट्स पे डिपेंड कर रहे हो, मेक श्योर यू राइट नोट्स प्रॉपर्ली. एआई इज सेइंग यू टॉक अबाउट नोट्स, ये लिखिए वर्ड टू वर्ड. यू आर राइट दीस थिंग्स. इफ यू राइट थिंग्स इन शॉर्ट, आप चीज भूल सकते हैं. एंड एग्जाम में मेमोरी पे डिपेंड करना इज नॉट अ गुड थिंग. हैबिट पे डिपेंड करना इज मोर प्रैक्टिकल, राइट? खैर, एनीवे, वो था ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग. टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग उल्टा हो जाता है. या नीचे यू गॉट 2 एंड ऊपर यू गॉट 3. स्पेसिफिकली वी वांट टू टॉक अबाउट EG एंड P2 आर व्हाट दीस थिंग्स आर कॉल्ड. एंड इंटरेस्टिंगली द एनर्जी इज स्मॉलर. अगेन व्हाई? थ्योरी है पढ़ने के लिए, क्यों है कम, एटसेट्रा एटसेट्रा. We spent a lot of time on theory, haven't we? It's okay. We have a lot of time today since we started before time. Yeah, metal carbonyl के ऊपर again ये है JEE एडवांस का फेवरेट. One of those things that will be tested here. अगर इस पे अगर JEE में सवाल आएगा एडवांस में, it will be either from isomerism or from stuff like this, जो हम लोग ज्यादा इस पे टाइम नहीं खर्च करेंगे because JEE में नहीं पूछा जाता ये सब चीजें, which is good because किस इंजीनियर को इसकी जरूरत पड़ेगी? किसी को नहीं, literally no engineer. So, but anyway, JEE एडवांस अभी भी पूछना है तो पूछता है. Let's start with some questions. हैं आप लोग? Are you guys around? सब लोग उठे हुए हैं, जागे हुए हैं? जागो भारत. Is that what the phrase? What I forgot what the phrase was. Khair, if you haven't registered for the mock test, you really should. It's going to be a fun mock test tomorrow. You can take the test anytime between 3 and 10 p.m. शुरू करें? Oh, I'm not all the way in the side, am I? Let's fix this. Ah. Shoot. We're going to move really slowly to the left. Yeah, there you go. Zinda hai abhi bhi. Very nice. And we are slowly moving to the side. It's like that chair that moves to the side very, very slowly and slowly. Anyway, here is the question. Here's the first question for you. FeCN6 3 minus. जाग रहे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया. सत्यम प्रणाम. Rek, Cypher, all of you are here. AI भाई साहब अब हैं यहाँ पे. FeCN6 whole 3 minus should be an inner orbital complex. Ignoring the pairing energy, the value of crystal field stabilization energy for this complex is what? What? How do you start this question? How do you start this question? I think that's beautiful. All right, try it out. I don't know. And I sort of like, wait a minute. इसको शुरू कैसे किया इस सवाल को? So I like this question. That's why I put it here for you. Try it out, please. Do you need a hint as to how to start this question? कोई doubts हैं? I mean, doubts in the sense कि do you have an idea as to उसको कैसे शुरू किया जाए? कोई दिमाग में कुछ चीज बैठ रही है कि what is the first thing? Like, once you get that, then stuff is very doable. Shall we write down the basics, right? What do you know for sure? What do I know for sure? I know for sure कि आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. आर्गॉन होगा, उसके बाद होंगे 18 हो गए आर्गॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और होंगे. 8 में से 2 होंगे 4s2 में, बाकी 6 होंगे 3d में. तो दिस इज गोइंग टू बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन. दिस आई एम श्योर अबाउट. दूसरी बात क्या है?
ये तो आयन हो गया, बट आई हैव टू गो टू Fe3+ एंड मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे। और दूसरा क्या है, व्हाट काइंड ऑफ लिगैंड इज Cn, थोड़ा सोच के बताइए। 3 2 ओके, श्लोक सेज 3, साइफर सेज 2, ओके, ऑलराइट ऑलराइट, कूल कूल कूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, ये सब कर लिया, ठीक है, आई हैव डन दिस। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ये भी पक्का है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लिख लेते हैं। अब क्या करें, व्हाट डू वी डू नाउ? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब इट फोर्स पेयरिंग, ये भी ऑब्वियस बात है, इसमें नथिंग, नो बिग डील। व्हाट डू आई हैव टू डू हियर? सी, स्प्लिटिंग विल हैपन लाइक दिस। अगर आपको नाम नहीं भी याद है कि T2G EG कौन सा है, आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि भाई नीचे 3 है, ऊपर 2 है। मे बी डोंट रिमेंबर व्हाट इज T2G, व्हाट इज EG, बट आई फील यू शुड रिमेंबर व्हाट इज TG, व्हाट इज E2G, ठीक है, वो थोड़ा जरूरी है, बिकॉज कुछ क्वेश्चन में एज यू विल सी लेटर ऑन यही चीज जो है पूछी जाएगी कि भाई कि the knowledge of what is TG, what is E2G will be tested in the आगे के question. So it's important to know. So EG is the one with 2. कहाँ गया? Where is my thing? Yeah, okay, okay. This is EG, this is T2G. ठीक है. Similarly, this is octahedral field splitting. अगर tetrahedral field है, then the split will be उल्टा, और यहाँ पे G नहीं होगा. What is this G? And it has to do with symmetry, Gerard and all of that. For a later time. Okay. T and EG. Sorry, T2 and E. ठीक है, cool. So what do you think? What do we have to do next? Okay. Shlok is saying something. Cypher and Rek are all saying 2. CFSE is -0.6 times number of electrons. Strong. Okay, 2. Rakshita, what's up? T में dxy. Lovely. Shlok is going into detail. I was going to do that in one of the आगे questions, but thank you for that. And Shlok, in fact, what Shlok is saying is not very complicated. ये NCERT में दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है NCERT पढ़ लो। अगर आप कोई नोट्स पे डिपेंड हो, अच्छा, अगर ये नोट्स पे नहीं है तो भाई NCERT पढ़ लो, जरूरी है। खैर, सो लेट्स ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की वजह से 5 इलेक्ट्रॉन में जाएंगे। सो हाउ डज दिस पेयरिंग एक्चुअली हैपन? आई हैव ड्रॉन इट ओवर हियर, बट एक्चुअली कैसे होता है? मतलब व्हाट आई मीन टू से इज पहले हाफ फिल होंगे सारे, उसके बाद फिल होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले 2 फिर 2 और फिर 1। आई नो इट्स द सेम थिंग, बट ऐसा नहीं होता है। बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है? बिकॉज अगर वैसा होता और आपके 3 इलेक्ट्रॉन होते, यू विल डू दिस और यू विल डू दिस, और ये वाला तो गलत है। दिस इज करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? क्योंकि दे आर ऑल डीजेनरेट, ये तीनों डीजेनरेट है, ठीक है? इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कैसे इसको फिल करते हैं। इन दिस केस इट डजंट मैटर, बट एनीवे, ठीक है, 5 हो गए। नाउ एज आवर फ्रेंड्स वर सेइंग समथिंग, युवराज इज सेइंग 2, श्लोक इज सेइंग समथिंग एल्स। Oh no, 0.4 times होगा श्लोक। श्लोक has realized it. हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं बिकॉज ये थियोरी वाली चीजें हैं, एंड श्लोक ने खुद रियलाइज कर लिया है। युवराज एब्सोल्युटली राइट। तो आई डोंट रिमेंबर 0.6 एंड 0.4 बिकॉज आई डोंट लाइक डेसिमल्स। मैंने लिख लिए हैं फ्रैक्शन, 3/5 - 2/5, ये आसान रहता है ना। आई टेल यू हाउ टू रिमेंबर दिस। 3 मतलब उल्टा, यहाँ पे 2 है तो नीचे है 3, दैट्स हाउ आई रिमेंबर। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है? So sometimes if you're going to mug, form a story behind the mugging. It's easier, life is easier that way, है ना? Life is easier that way. 3/5 ऊपर, 2/5 नीचे, ठीक है? Cool. Slok, it's okay, don't worry about it. But lesson learned. अब आप एग्जाम में नहीं करोगे, यहाँ पे कर लिया, अच्छी बात है। In our exercises you have done this, एग्जाम में नहीं करोगे, no problem, ठीक है? Now that you have done this, अब क्या करें? Now all of you seem to have figured out why have you multiplied by 5? भाई मुझे बताओगे क्यों आपने इसको मल्टीप्लाई किया है 5 से? बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन है, इज दैट द रीजन? लॉजिक क्या है इसका? ट्रिक तो सही है, ओके कूल। हाँ, ट्रिक एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने सी यू गाइस आर गिविंग मी अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर टेलिंग यू दीस ट्रिक्स, बट लिटरली एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है? इसलिए आपसे विनती करता हूँ, एनसीईआरटी में पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, लाइफ विल बी अ लॉट इजियर। आजकल आई थिंक मे बी व्हेन आई वाज इन स्कूल we didn't have the luxury of too many resources. I had NCERT, I had JEE. JEE मैंने नहीं पढ़ी थी until April. मेरा एग्जाम था अप्रैल नहीं, हाँ जेई था शायद अप्रैल में ही था, और AIEEE शायद मई एंड में था। तो 1 महीने में मैंने JEE पढ़ी बस, और उससे पहले मैंने JEE खोली नहीं थी। एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाई डिड आई नॉट स्टडी दिस बुक अर्लियर? सो एनीवे, और एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी थी। आई एम शेमलेस, जस्ट लाइक यू। आप लोग भी नहीं पढ़ते, मैंने भी नहीं पढ़ी थी। लास्ट 1 मंथ में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, और बोर्ड्स के बाद, बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी बिकॉज आई हैड रियली गुड टीचर्स आई हैड,
I got a good score in all subjects except I think physics. Whatever numbers I got doesn't matter. But मैं बता रहा हूँ आपको कि एनसीईआरटी मैंने उसके बाद पढ़ी एंड दैट हेल्प मी एट्रिपली सो मच जस्ट रीडिंग एनसीईआरटी स्पेशली इन मैथ्स. मैथ्स में मेरे केस में एआई ट्रिपली में डायरेक्टली सवाल आए थे, सब्जेक्टिव सवाल. और आजकल बोलते हैं मैथ्स हार्ड हो गया. आई डोंट नो. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. डायरेक्टली एनसीईआरटी के पीछे सब्जेक्टिव सवाल जो सवाल थे वो आए थे मैथ्स में एआई ट्रिपली में. आई वाज लाइक ब्रो, this is good, this is easy, it should be like that. And the funny thing is, things haven't changed so much in the last 20 years, which is an interesting thing that I just wanted to share with you. Total electrons 5, okay, all right. Number of E is 5, yeah, cool. Trick अच्छी है, all right, cool, right, that's good to know. Frequency matching है. Yeah, I know, right, Yuvraj and Shlok. Yeah, absolutely. So anyway, answer इसका है -2. आंसर होगा just 2, not -2 because negative बाहर दिया हुआ है. It's good that you understand it. अगर इसकी थियोरी आपको डिटेल में देखनी है तो प्लीज again, guess what I'm going to say? JDL. From now on, I'm not going to bring the book. Every time I do this, assume that the book is in my hand. It's too heavy for me to pick it up all the time and I have spondylitis, bro. अगला सवाल करते हैं. Freewheeling session, huh? The homoleptic and octahedral complex of CO2 plus and H2O has dash unpaired electrons in the T2G set of orbitals. देखो, मैंने पिछले ही सवाल में आपको याद करवाया था T2G कौन सा होता है, EG कौन सा होता है. तो अभी ये कर लो, आसानी से कर लो. Yeah, try this one out. And you'll see a pattern in all of these questions, okay? Because this is what JEE tests. Your ability to catch the pattern. All right. Sweet. Now, यहाँ पे, in a question like this, sometimes, okay, कर लो. I'll tell you what I mean. करो. Try it out. मेरे दिमाग में thought था, but I thought that will ruin your thought process. So you please try it out. Yeah. I'm finding something interesting for you in parallel. High spin, okay. Cypher says 1. Oh, सब लोग बोल रहे हैं 1. बहुत जल्दी कर लिया आप लोगों ने. Oh, Rex said 5. Tanish is T24 EG2. यार, दो चीजें तुम लिख रहे हो. You're asking me or you're telling me? हाँ, it is going to be one of those two ना. तनिष भाई, उन दोनों में से एक होने वाला है. Yes, exactly. You got my what I was thinking. Okay. Yuvraj says 1 unpaired. Yuvraj, Shlok are both saying this thing. I read as fat, Rudy. And I was going to say, you don't have to fat shame anybody. आ रहा है तो आ रहा है, चला भी जाएगा. The good thing about exams, by the way, ये एक एग्जाम है. आप कॉलेज में जाओगे ना, हर सेमेस्टर में 6 एग्जाम होंगे. And every exam is going to feel like this. So it's okay. This is just like a, what do you call, bump in the road, so to speak. हो जाएगा. Rek also saying 1. Cypher, सब लोग बोल रहे हैं 1. E2, EG2, T2G5. अच्छा. प्रणाम नेपाल से दर्जी जी. That's great. Oh, unpaired 1, high spin. यार आराम से पढ़ लो. This is cool. Okay, Yuvraj. Okay, I like that. Okay, everyone is saying 1. Okay, sweet. Sri, thank you. I think you all figured it out. बढ़िया है. मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है. That's good to know. So, what do we do here? You want me to write down the electronic configuration of cobalt? We can do that. It's argon and 3d7 and 4s2, right? Cobalt है 27. How I do this, by the way, बहुत basic पे जाते हैं. How did I write this? Not because I'm a genius or something. I don't remember crap. मेरे को कुछ याद नहीं रहता लाइफ में. 27 I know is 18 plus 2 becomes 20. 18 इसका plus 2. तो बचे 7 which goes here. That's just the general idea. ठीक है. So 18 argon के 2 4s2 के. I know copper और zinc पे ऐसा नहीं होता, but वो हमेशा याद रहता है. जो चीज याद नहीं रहती उसका. I always get confused between cobalt, nickel and all of that, right? I remember kind of 27 है, तो 3d7 यहाँ पे आ गया. ठीक है. अब इसको हटा दो, 2 हटा दो, तो बच गया 3d7. तो 3d7 का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? दिस इज अ वीक फील्ड लिगैंड. यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट. कोई चीज सोचने की है ही नहीं ज्यादा.
EG T2G लिख लीजिए, इस सवाल में जरूरी है इसलिए मैंने लिख दिया है क्या है EG और T2G. Once you do this beautiful thing, you write down its configuration फिर से and start filling. Again, filling कैसे करोगे? 1 2 3 4, नॉट पेयरिंग, गड़बड़ी कर दी, 4 5 6 और 7. ओके, व्हाई? बिकॉज वीक फील्ड लिगैंड. पहले ये सब फिल करोगे. सो इन T2G सिर्फ है एक और यहां पे है दो और. जल्दी में मत करो, ठीक है? The answer to this is simply going to be numero uno. 1 होगा क्या? Yes भाई, 1 ही होगा. Which smile very weird. No, no, no. कोई झोल नहीं है. You're good, you're good. All of you are good. अरे my smile is weird, bro. क्या करूं? चेहरा ऐसा, क्या करें? Let's go on. Let's go on. Yeah. No, what I was saying is कि अगर कोई ज्यादा पढ़ लेता, कोई ज्यादा पढ़ के आया होता, तो वो बोलता मुझे कि यार कोबाल्ट H2O6 3+, ये तो होता है डायमैग्नेटिक. एंड देन थिंग्स वुड गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग. अगर आप ठीक से पढ़ते नहीं, इफ यू वुड मेक इट 3+, then life would be fun. Then life would be fun. Because this is not what happens then. Yeah, all 6 are right here. खैर, we won't talk about that right now. And that's a side effect of ज्यादा पढ़ना. और ज्यादा क्या पढ़ना? ज्यादा हैक्स पढ़ना. ठीक से पढ़ो. अगर आप जेई से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले सडनली कोई नई चीज शुरू कर रहे हो ना, यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर अ ट्रैप. एंड आई एम सेइंग दिस फॉर योर ओन बेनिफिट. अगर आपको कोई चीज अभी तक नहीं आती है, नया शुरू मत करिए. जो आपको ऑलरेडी आता है, थोड़ा बहुत आता है, शार्पन दैट स्किल. दैट्स माय ऑनेस्ट एडवाइस टू यू, स्पेशली इन थिंग्स लाइक दिस जो लगती है आसान है. बट जेई नोज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट कोचिंग हैज बीन डूइंग फॉर द लास्ट 20 years, नॉट फॉर द लास्ट 30-40 years. 20 साल तक तो उनके मालूम है क्या चल रहा है, क्योंकि तब से उन्होंने ऑब्जेक्टिव किया था 2006 में. सो दे हैव सम आइडिया ऑफ व्हाट यू गाइस आर, यू नो, व्हाट इज बीइंग टॉट. एंड दे विल पुट यू इन दीस काइंड ऑफ ट्रैप्स. लाइक दिस इज अ ट्रैप. अगर किसी को लगता है CO3+ होता, तो बिल्कुल ही अलग सीन हो जाता. ठीक है? आंसर बहुत लोग जीरो देके आते, बहुत लोग जीरो देके आते. हाँ देखो, यही यही चीज है. श्री श्री मैं यही ट्रिक को बोल रहा था, थोड़ा ध्यान से करो, कभी कभी नहीं होगा तो. बट व्हाई इज दैट, श्री? द ट्रिक इज गुड. सी, मैं ये बोलने की कोशिश कर, श्री इट्स गुड, यू नो द ट्रिक, राइट? यू नो हाउ टू अप्लाई इट. But a lot of students don't. A lot of students bug the trick without knowing where the trick fails. And as in anything else, आपको मालूम है कि whatever you're applying, where does that thing fail? अगर आपको theory मालूम है, then be confident about writing it. Otherwise, randomly hack मत use करिए, negative marks आ जाएंगे. अगला सवाल करते हैं. Number of ambidentate ligands in a representative metal complex. MENSCN. What is representative metal? Uh, just saying M, could be anything, right? ENSCN4 representative मतलब कुल्हाड़ी पे पैर रखना. ओके, वाओ रूडी भाई, बहुत जल्दी देते हो आंसर. ये सवाल लगता है आप लोगों ने कहीं देखा हुआ है. ओके, रूडी भाई says 4, श्लोक says 4, साइफर भाई says, पटेल जी says 4, रेक्स says 4, युवराज also says 4. 5 लोग बोलते हुए 4. That has to be a new record. इतनी जल्दी आप लोगों ने किया. So what was the process behind this, guys? Number of ambidentate ligands. Shri, looks like you have figured this out. But for the folks who haven't figured it out, how do you do this sort of a thing? देखो, ambidentate ligand तो सिर्फ एक है, SCN, right? EN is not ambidentate. That's what you got to figure out. SCN या NCS, इन दोनों से bonding हो सकती है. What is ethylene diamine? EN क्या होता है? लिख दिया already, but anyway, right? Is this thing right here? Cool. Thiocyanate, okay, cool. Ambidentate. SCN is ambidentate. Yeah. You're right, Yuvraj. SCN is, ये दोनों, right? Both of these can form the ligand, can act as the ligand. So यहाँ पे, in both of these cases, the same binding atom यहाँ पे है. Okay, the atom doesn't change. नाइट्रोजन से हाइड्रोजन तो होता नहीं है, तो it's not ambidentate. Please don't get confused this. कभी-कभी अंग्रेजी से लोग, you know, they are thrown away, they're thrown off by things. So this is not ambidentate. It's just, what is this called? by the way, इसको क्या बोलते हैं? It has two things. को कुछ नाम है. What is this one called? SCN4 है. EN is bidentate. हाँ, slow. Thank you. Bidentate. And it also chelates. Okay. Cool. So bidentate and
एम्बीडेंटेट में फर्क है। तो ये जरूरी है कि हम लोग ध्यान से चीजें पढ़ें। अगर आप लास्ट मिनट में पढ़ेंगे तो यार, अगेन दिस इज वन ऑफ दोस ट्रैप्स फॉर दोस हैकी थिंग्स दैट पीपल डू। एम्बी और बाय में फर्क क्या है? Bi means two. Ambi means ambivalent, right? Think Angrezi. Let's go to the root of this word. Right hand, left hand. Ambidextrous मतलब दोनों हाथ से, being good at maybe writing with both your hands. Okay? So I can write my right hand, also my left hand. So ambidextrous. Play tennis with my right hand, also my left hand. Ambidextrous. Ambi मतलब good with both. Okay? Bi just means the word two. Try means three. Go into the word root of things. And you will be like, यार, why is this guy teaching me अंग्रेजी? Because इस केस में अंग्रेजी सीखना जरूरी है। वर्ड रूट पे जाइए, अब आप कभी नहीं भूलोगे। इफ यू हैव जस्ट हर्ड मी फॉर द लास्ट 30 सेकंड्स, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। आंसर तो 4 ही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है 4 ऑफ दीज गाइस, राइट? यही है। This answer is 4. You're absolutely right. But I want to spend some time on the difference between bidentate and ambidentate. Thank you for helping me out, Shlo. All right, good. Yes, Cypher, perfect. Yes. Two sides. Rec, remember ambi is this. So definition बहुत अच्छी है, but ambi इस तरह करेंगे, मतलब दोनों में से कोई एक भी participate कर सकता है। ambi means this. Ambidextrous से याद रखिए ambidentate. Bi means two. Tri means three. Yeah, like EDTA is a quad or tetra है, जो भी बोलना चाहो। ओके शीतल, प्रणाम। वेटरन जी, अगला सवाल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। You be like, there are too many numerical entry questions because I have changed some what do you call it, जो multiple choices को मैंने numerical entry कर दिया है। So have fun. In potassium ferrocyanide there are dash pairs of electrons in the T2G set of orbitals. दो चीजें करनी है। Now what on earth is ferrocyanide? ये you need to know. दूसरी चीज, T2G तो अभी तक मालूम हो गया कि नीचे वाला T2G है, ठीक है, जिसमें 3 होते हैं। That I think we are all comfortable with. T2G क्या होता है? T2G क्या होता है? नीचे वाला ही है ना, ऊपर वाला तो नहीं है पक्का। After being so confident about this, उल्टा बोल दिया तो भी funny. T2G हाँ नीचे वाला होता है। I have NCERT open. I can cheat in this. Yeah. All right. So what is potassium ferrocyanide? Not ferry, ferro. ध्यान से करो. Not ferry. Ferro should give you a hint. This is 2. Okay. Ferry होता तो oxidation state उसका 3 होता। So primary valency, I think, I don't know, I think, primary, not 1, let me write, primary valency, the oxidation state बोले थे ना, forget all this, oxidation state यहाँ पे होगा 2, okay, एक बार फिर से बता दो T2G। रूडी भाई देखो, ये है T2G, नीचे वाला है T2G, ऊपर वाला है EG, भगवान, EG, K4 FeCN6, K4 FeCN6 says Sheetal and Shlok. Lovely. Okay, all of you know. That's good. मैं भूल जाता यार फेरो फेरी में, तो that's how I remember. I would work backwards because I am bad at mugging stuff up, bro. So I would work backwards to get that, right? Like ferrocyanide मतलब Fe2 plus. Okay, Fe2 plus हो गया और cyanide हो गए 6, because यही होता है, 6 ही होते हैं, ठीक है। तो ये 6 माइनस हो गए, तो 6 माइनस ये मतलब होगा इसका 4 माइनस। अब अगर 4 माइनस हो गया तब ठीक है, तब पोटेशियम डाल ही दो, तो K4 FeCN6. This is how I would get to it. I'm not kidding. I'm not making this up on the fly. This is how I would figure it out in the exam, because मेरे में शर्म नहीं है, मैं ऐसे ही करता था क्योंकि मेरे से नहीं याद होता था यार, और मैं गलती कर देता था। नेगेटिव मार्किंग आई वुड हेट इट बाय द एंड ऑफ व्हाटएवर एग्जाम। आई वुड लाइक, नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, जो भी करना है नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए। खैर K4 FeCN6 is this, K3 FeCN6 would be ferry, right? क्योंकि ये होता 3 प्लस, ये होता 6 एनीवे, सो 3 माइनस होता, ये है फेरो, ठीक है, लवली। मैंने बता दिया T2G कौन सा है, अभी भी सब लोग 3 ही बोल रहे हैं। ओके, श्लोक says 3, साइफर says 3, रेक्स says 3 पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, युवराज is 6। ओके, टूडी आंसर तो बता भाई। मोस्ट फेमस कंपाउंड of coordination compounds, Rex says yes। all right, everybody, okay, pre-board, किंग फैन के प्री-बोर्ड्स हैं, ऑल द बेस्ट ब्रो। बोर्ड्स के आगे जेई भी है। खैर, फेरोफेरी में क्या होता है, फिर से वही चीज मैं बोल रहा था, वहीं पे लिखी है मैंने। तो 2 प्लस इज K4 FeCN6, मतलब इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम एज बिफोर, आर्गॉन 3d6 4s2,
4s2 हटा दो 2 प्लस में, दैट्स इट. सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है. वंस यू डू दिस, साइनाइड है ना, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड. वंस यू डू दिस, पेयरिंग होगी. कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन. ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले जाएंगे, राइट ओवर हियर, राइट. सारे 6 इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए. आंसर क्या होगा इसका? एज ऑल ऑफ यू हैव करेक्टली पॉइंट आउट, 3 पेयर्स. गुड वर्क, गुड वर्क, गुड वर्क. ऑल राइट. You had, okay, I'm going to read that out. Sheetal, that's very interesting. That has happened to me. And yeah, you know, that's okay, I'm going to read that out. Tasted ferrous ammonium sulfate in our dear more salt and chemistry class well practicals. Bad experience. Yeah, man. Oh, you guys still have that? Wait, hold on. I thought you guys would have those pipettes that look like these pens that you press and अभी तक ये नहीं हुआ है. सही है यार. मेरे स्कूल में भी ऐसा ही था. Even I had those pipettes where you had to actually, you know, well, yeah, using the suction of your whatever and you know, get that up there and dude, that was scary. I have a lot of times, I'm pretty sure, drank HCl, obviously not very strong because that would be scary, 0.01 or whatever. No, I think it was acetic acid. I don't think they would make us pipette HCl. Yeah, that was acetic acid. Definitely acetic acid. खट्टा था. Acetic acid था. HCl नहीं हो सकता था. I don't think I'd be with you अगर HCl होता तो. खैर, please take care. Oxalic acid था. Yes, श्लोक. Oxalic होने के chances ज्यादा है. Yeah. किंग फैन बोल रहे हैं वेरिएशन ऑफ लिगेंड्स फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग. किंग फैन यार एनसीईआरटी है, खोल ले. आई कांट बिलीव आई एम डूइंग दिस. लाइक देयर इज अ हाइट ऑफ लेजीनेस, राइट? एंड यू गाइस टेक द केक एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई थिंक कि और लेजी तो नहीं हो सकते हो, इतना तो नहीं हो, बट देन देयर इज दैट. आई एम जस्ट पुलिंग अ लेग ब्रो, चिल. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दिस. एंड वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? दिस इज वेयर यू ड्रॉ द लाइन अप्रोक्सीमेटली हियर. ठीक है, ये सब है स्ट्रॉन्ग, इसके पहले है वीक. Here it is for you guys. यार एनसीईआरटी पढ़ ले यार, come on. पीपीटी में ये भी हो सकता है. HCl होता था, आप बोल नहीं पाते. बिल्कुल सही बोला रूडी. HCl होता बोल नहीं पाते. ऑक्सैलिक एसिड ही हुआ होगा. You're right. एसिटिक एसिड भी नहीं होगा, ऑक्सैलिक ही होगा, बिकॉज स्टैंडर्ड तो वही होता था. प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं, प्राइमरी ऑक्सैलिक होता था क्या? खैर, whatever, man, scary days. But you know what? I had a really good teacher, Shivgani ma'am, lab teacher. She would let us mess around with all tests not in our syllabus, just because. So in our syllabus तो कुछ ही चीज जला सकते थे ना. She gave us all compounds like flame test, जो भी जलाना जलाओ. And we took it further by trying to burn the ink of the gel pen, which was very bright blue. And we're like, bro, इसमें metal नहीं है, ये तो plastic जल रहा है, क्या है color? ठीक है, but anyway, that was interesting. Also, all those qualitative analysis मुझे अभी भी याद है क्योंकि शिवगामी मैम let us do these things properly, the salt analysis bit, वो ठीक से करना. अगला सवाल. The ratio of spin only magnetic moment values mu effective chromium CN6 3 minus, मतलब ये 3 प्लस होगा इधर, versus mu effective chromium H2O6 3 plus is what? ट्राई करो इसको प्लीज. अभी जो किंग फैन ने पूछा था, that will be useful right over here. Try it out. बुक दूसरे रूम में. वाह, किंग फैन जी का एक्सक्यूज देखो जरा. बुक दूसरे रूम में. यार मेरी कौन सी बुक इस रूम में? मैं तो तुमको जो कंप्यूटर में खोल के दिखा रहा हूँ, फोन पे देख नहीं सकते. सही है यार. What excuses, bro? I think by college, what you'll get better at is making these excuses, I think, if nothing else. Use ChatGPT. Can you help me make excuses as to why I can't open a book right now? Let's do that. Sure. Anyway. One is the answer. One is the answer. Rec ने लगता है पहले किया हुआ है. Cypher, Rec, Shlok are all saying one. Okay. Cypher, Rec, Shlok. Jaldi, jaldi. This is so easy. Search 0. Yuvraj says 0. Acha. This is interesting. Yuvraj says 0. यार युवराज, 0 कैसे होगा यार? अगर आयन होता Fe 2 प्लस, तब शायद I could maybe think about how maybe you could get to this. But यार, ठीक है, anyway, you try. I feel 0 is a little weird. King fan and युवराज से 0. अच्छा, तो मुझे थोड़ा बताओ, what is your thinking about 0? Can you help me with your thinking about 0? 1 I kind of understand. नहीं, 1 होगा. नहीं, 1 नहीं होगा, 1 होगा. No, it's 1. I can feel you shouting through your mobile screen at me. Yuvraj slipped in the oil. They put oil there for it. श्लोक poetic हो रहे हैं. श्लोक सही है. युवराज थोड़ा बता यार, मतलब honestly help me out, help me understand 0 कहां से आया. Then we'll see how this works. Okay, let's see. Chromium 3 plus है, यहाँ पे भी 3 plus है. हाँ, chromium क्या होता है? Electronic configuration. Right, you have argon. Chromium क्या था? 24, right?
सो 24 मतलब 3d4 नहीं, 3d4 नहीं होगा ये होगा 3d5 4s1, ठीक है। अब इससे अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यू हैव, ये तो चला गया और 2 और चले जाएंगे तो 3d3 होगा। तो यार जीरो कैसे होगा, मैं समझ नहीं पा रहा। स्ट्रॉन्ग एंड वीक में कंफ्यूज कर लिया। नहीं यार, स्ट्रॉन्ग वीक कुछ भी करो, 3 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी क्या है, बढ़िया है, जल्दी में हो गया। अरे वाह किंग वेंकटेश 1, युवराज पेयरिंग होगा, बट पेयरिंग में यही तो बता रहा था यार। ओके 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 ठीक है, लेट्स गो। फर्स्ट वन इज एक्सेप्शन। मतलब किंग क्या हुआ एक्सेप्शन, मतलब पानी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट हाउ डज इट मैटर गाइस, इट्स जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इधर स्ट्रॉन्ग या वीक का कोई, इट हैज नो मीनिंग। कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया। ओ युवराज, आपने 3d6 ले लिया क्या? Oh, I know what you did. You didn't take Cr2 3 plus. You just took 3R. Cr, sorry. You didn't take Cr3 plus or something like कुछ किया आपने अजीब। खैर anyway, configuration गलत हो गया। Strong or weak field ligand, but it doesn't matter. It doesn't matter. And what you are saying is right. 3 plus है तो भाई pairing होने के chances यहाँ पे भी है। But it does not matter. It does not matter क्योंकि 3 plus में सिर्फ 3 है और मैंने आपको बोला था ये degenerate orbitals हैं, मतलब they have the same energy. They will fill like this. Okay, because yaar Hooke's rule is still applicable, man. You're not going to have something like this. Yeah, you're not going to do that, right? This is not going to happen. यार उसके बाद after that you do n into n plus 2 या जो भी है, but क्यों करोगे आप? Why would you do that is what I'm trying to ask you. दोनों का n value is same, no? n equal to 3 for both. So the ratio is going to be simply 1. Yeah? You're not feeling well, King. It's okay, bro. It's okay. यार मेरे साथ लर्निंग एक्सपीरियंस है, यू आर इन अ चिल सेफ जोन, यू कैन बी ओपन, नो वन गोइंग टू रिडिक्यूल यू। अगर हम लोग हंसेंगे आपके साथ में हंसेंगे, यू कैन लाफ एट मी एंड वी विल, यू नो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट द फोकस इज आफ्टर यू डू दिस आपको बाद में डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? दैट्स द गोल ऑफ आवर क्लासेस, सो लेट्स फोकस ऑन दैट। कूल, ठीक है, इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। Cr2+, वाह युवराज ने नया स्पीशीज, ठीक है, Cr2+ बनता है क्या? चलो निकाला जाए जेडीली, जस्ट टू फ्लेक्स अ लिटिल बिट। क्या Cr2+ बनता है? just to see, I'm curious now. Cr2+ जरूर होगा। You know the funny thing about these compounds is that you get every single thing, but oxidation state of Cr2+, okay, I'll write it down exactly, okay, यहाँ पे लिखते हैं, it's fantastic. I like this book a lot because it's so random, मतलब random in the sense कि यार real life is random and it kind of encapsulates that, right? And if you'll see in JDL हर चीज का इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है? So it says that there are some short-lived species like this, but instead यही चीज is more prominent, ठीक है? तो Cr2+ could exist, but actually it does not because kinetic stuff, ठीक है? If you want more details, I know you are kidding, not kidding, आपने गलती कर दी, but Cr2+ कहाँ होता है, नहीं होता है, but now you'll know कि यार Cr2+ के होने के chances काफी कम है, and ये किस स्टेट में? This is acidic solution में, ठीक है? If you are wondering why on earth am I copying JDL for you, because अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लिटरली, लाइक लोग NCERT लाइन बाय लाइन करते हैं, हम लोग JDL लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। सिमिलरली इन अ बेसिक सोल्यूशन व्हाट हैपेंस विद क्रोमियम इज, मैं बस अभी उसकी 3+ और की बात कर रहा हूँ, 6+ का अभी बात नहीं कर रहे, बिकॉज द कंफ्यूजन वाज डज दिस गाय इवन एग्जिस्ट, राइट? Does this exist? Well, here's the thing, right? Again, it decides to go all the way here, okay, -1.3, और ये बीच वाले which is -1.1 and -1.4, they just don't happen, okay? And all of this is calculated from thermodynamic data, etc etc. एक बार फिर से देख लेता हूँ, anything else about the +2 state? I don't think so. +2 state, chromium का है, CrCl2 and all exist, but not very long-lived species. CrF2 exists. खैर, we'll stop this right now. I think this was a fun exercise, but I don't want to bore you. क्योंकि मैं बुक देख रहा हूँ, आप लोग बुक नहीं, आपको मजा नहीं आएगा। श्लोक, एक बात बता रहा हूं मैं, ये सब चीज goes out the window very quickly, right? You can go around a lot with a lot of logic, and they'll be like, you know, chemistry is going to be laugh at you like, ha, I exist. Like CrF2 is a stable compound. It just is, guys. Like, so be humble.
जो भी चीज है एग्जिस्ट करती है एज इट इज, आई एम पॉइंटिंग द बुक दैट्स डाउन देयर, इट जस्ट इज। एंड जेडीली इज जस्ट अ स्टार्टर्स बुक, ठीक है, देयर आर मेनी अदर बुक्स लाइक पॉला ब्रूस एंड बहुत रिसर्च पेपर्स हैं दैट टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्ट एंड डोंट एग्जिस्ट। खैर, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक सीरीज बना लाइन बाय लाइन जेडीली। यार युवराज, पूरा साल मैं वही करता रहूंगा, लाइन बाय लाइन जेडीली करें तो हम लोग लाइक लिटरली पूरा साल सारे लाइक 50-60 क्लास हम लोग बैठ के जेडीली पढ़ते रहेंगे, ठीक है। एंड देन उसमें एक स्टूडेंट होगा, मे बी यू, मे बी कुछ दिन आप भी आना बंद कर दोगे। इफ Ni2 plus is replaced by Pt2 plus in the complex NiCl2 Br22 minus, how many of the following properties are expected to get changed? इसका आंसर भी नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई इट आउट। शीतल यार, ही इज किडिंग ब्रो, ही इज किडिंग। हम नहीं नहीं, द रीजनिंग इज गुड, श्लोक रीजनिंग इज गुड, बट आई एम सेइंग कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लिख लो यार जहां लिखना है मार्क्स के लिए, but if you actually want to know what's going on, read a book or look it up on chemistry stack exchange. A lot of people tell you read a research paper, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो ना, क्या फर्क पड़ जाता है। एंड थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने से बोरियत कम होती है, अदरवाइज इट्स वेरी ड्राई रीडिंग ऑल दिस, मगिंग ऑल दिस gets to you, I'm sure. खैर, anyway, all right, yeah, don't worry about it, let's just keep it a respectable thing. Let's try and do this question, yeah, all right। आदित्य विक्रम महेश्वरी, बढ़िया सवाल, completely unrelated to any of this। Let's do this question, guys, please। प्लैटिनम की कॉन्फ़िगरेशन, चीट कोड यार, साइफर। प्लैटिनम की कॉन्फ़िगरेशन, ओके, चलो, let us ask our best source। I could tell you, but I'd have to kill, no, I'm not James Bond, don't worry। ptable.org। If I showed you where it's at in the periodic table, will you be able to figure it out? देखो यहां है प्लैटिनम, अरे दिख ही नहीं रहा आप लोग, यहां देखो, देखिए, right here is platinum, you able to see this? Where is platinum? Platinum किस ग्रुप में है? निकेल, पैलेडियम, platinum। Can you figure it out from here? इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? Can you figure it out? Yeah, ABC won't change, just look। Rex says 1, ज्योति प्रसाद जी says 2। कौन पूछ रहा था? हाँ, साइफर, डू यू नीड हेल्प विद दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मेरे सर के ऊपर शायद लिखी होगी, वैसे थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिखी है, but it says 2, 8, 18, 32, 17 and 1। This doesn't help, does it? ठीक है, I'll write it down, don't worry। लिख देता हूँ, what's the configuration? I don't know if that's going to technically help you very directly or not, it may indirectly help you, sure। Platinum की configuration is going to be xenon 4f14 6, sorry, 5d8, और बचा क्या, कितने बचे हैं? 6s1, I want to say, or is it 2? It's 2, no, 6s1 is correct। I think this should be the configuration, should it not? देखना पड़ेगा। Did I write it down here somewhere? Yeah, this is correct, 5d8 6s2। Yeah, 6s2 ही होगा, right? Okay, cool। Oh, आदित्य भाई साहब, अच्छा, F in HOF, okay, cool। ठीक है, don't worry आदित्य, I'm just pulling a leg here। I know you've been around a lot, you're a polite guy। मैं तुम्हारी ऐसी मस्ती कर रहा था। I'll answer your question for sure। I'll answer your question too, आदित्य, just stick around। Time consuming questions होते हैं, हाँ, you're right शीतल, you're right, it takes a little bit of time। 5d8 6s2 NCERT में है शायद से श्लोक। D magnetic properties change temperature dependence orbital momentum, वाह, okay। Ni2 plus with strong field ligament makes square planar। कैफ आके सीधे सेंचुरी मारते हुए, कैफ की मैंने इनिंग्स देखी थी, मैं स्कूल में था जब कैफ भाई साहब गए थे इंग्लैंड में, एंड सौरव दादा like took off his shirt and started doing that was a crazy innings, man, what a fielder मोहम्मद कैफ was। या तब मैं क्रिकेट देखता था, आजकल कम देखता हूँ, बट कैफ आते ही सीधे प्लेइंग हिज यूजुअल इनिंग्स। Ni2 plus with strong field ligament makes square planar। बट कैफ ये तो वीक है, आप स्ट्रांग हो, बट निकल भी ऐसा ही है, जो भी है, बट Cl2 and Br2 are both weak, है ना? नहीं, is the reason Shlok says is the reason we don't use Swinerly formula beyond 3D series। Okay, cool, yes, thank you, absolutely right। Integer based answer, yes, Cypher, integer based answer। If you're wondering why I've changed the question, NCERT, I mean, and जो भी PYQ में आया था, it was not integer based, it was like this and this, but let's see, integer based करते हैं, makes things interesting। 2003 में था, what a match, says Shlok।
Okay. Anyway, let's start solving this. I will try and get back to Aditya Vikram's question at the end of the session. HOF की हम लोग बात करेंगे end of the session. And as usual, I'm going to pull out the JEE and we're going to talk about it from there. But, khair. Okay, Shlok says 1, Cypher says 3. Any other takers? Finally, lock karo answer. Shlok says 1, Cypher says 3. Any other takers? एक या तीन? कौन से तीन, कौन सा एक? Not sure about D. Magnetic properties, not sure. Okay. Cypher, शालिनी ने कुछ बोला था. शालिनी ना, क्या नाम था उनका? शीतल, सॉरी. शीतल ने कुछ बोला था ऊपर. युवराज, मे बी दैट विल हेल्प. ए बी सी तो नहीं होगा यार. ए तो डेफिनेटली होगा. ओके, लेट्स गेट आउट. ए तो डेफिनेटली होगा. यही तो एक्सेप्शन है. आई थिंक आई डू अ सीरीज वेयर वी टॉक ओनली अबाउट एक्सेप्शंस टू द रूल. सम्यक ने सजेस्ट किया था, बहुत अच्छा आइडिया था. टेट्राहीड्रल है ये, वीक फील्ड लिगैंड, टेट्राहीड्रल है फॉर श्योर. ठीक है, तो यार दिस इज नॉट स्क्वायर प्लेनर. 1 2 ए नहीं होगा सर युवराज. पीटी BrCl2 5D होता है. 5D मतलब समथिंग लाइक दिस, राइट? इट फॉर्म स्क्वायर प्लेनर एंड नॉट टेट्राहीड्रल. ओके, ज्योमेट्री सही हो गया. शिवराज स्किप. शुरू में करना था स्किप. शुरू में करना था स्किप, बट गुड. स्किप इज अ गुड ऑप्शन. I would skip this too if it came like this, but ऐसे नहीं आया था सवाल. The question that came was a little bit easier. I made it a little more tricky, but it's okay, चलता है. जैसे ही ऐसा बना, जैसे ही you get this, you know it is possible for there to be isomers, geometrical isomers. कैसे? इधर 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 इधर. ठीक है, cis trans हो गए. And optically active नहीं है. Both are optically not active because there's a plane of symmetry. ये plane of compound itself is plane of symmetry, है ना? और ये तो भाई it does not have a what you call it stereo center तो नहीं है. Optical isomerism नहीं बदल रहा है. Geometrical isomerism बढ़ रहा है, geometry बदल रही है. Are you convinced with both of these points? युवराज ने आंसर ही नहीं दिया. हाँ नहीं, अच्छी बात है नहीं दिया. It's okay, होता है. Cipher is A, B and D. Cipher, या तो आपने कहीं देखा इसका आंसर या तो आपने एक्चुअली किया. ईदर वे, ब्यूटीफुली. वेल डन साइफर, वेल डन, गुड जॉब, बढ़िया, एक्सीलेंट. डू यू गाइस अग्री एज टू व्हाई, और यू नॉट अग्री? अगर आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे तो पूछ लिए कैसे. ए और बी सही है, कैसे इज ओके? ए और बी इज ओके, सोच के थोड़ा बताइए. हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन ऑक्साइड्स, पॉलीहेलाइड्स यहां नहीं होगा. हैलोजेंस, xenon कंपाउंड्स. हम HOF ढूंढ रहे हैं बाय द वे, आपको एग्जैक्टली बताने के लिए. इन द साइड, ओके, वी विल डू दैट. रेक, व्हिच पार्ट इज दिस इन एनसीईआरटी? यार एनसीईआरटी में हर चीजें नहीं होती है. यू हैव टू रीड इन डिटेल. रेक, ठीक है, लेट मी सी. एनसीईआरटी में कहां है? मुश्किल सवाल पूछ लिया. चलो ढूंढते हैं एनसीईआरटी में इसको. आई डोंट थिंक दिस इन एनसीईआरटी डू. लेट्स लुक फॉर प्लैटिनम. ठीक है, 5D के बारे में है इधर. इट्स पॉसिबल कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो. होल्ड ऑन, लेट्स सर्च फॉर द वर्ड 5D और 4D और 3D. 5D इसमें नहीं है. ओ देखो, बाप रे. वुड यू बिलीव दैट? आंसर्स टू सम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. यार ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये. देखो, for square planar shape the hybridization is dsp2. Unpaired electron 5d orbital pair up to make one d orbital empty dsp2 hybrid. Thus there are no unpaired electrons. आंसर दे दिया. रेक, you see that? Do you see that, Rek? Hold on, I'm going to open up the actual question back to back. उसको भी खोल के देखते हैं सवाल क्या है. टेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9.9. Predict the number of unpaired electrons is a square planar PT CN4 2 minus ion. Rek, I hope this helps. कोई कुछ पूछ रहा है. Sir, tetrahedral does not show geometrical isomerism, but square planar does. So if we get that right, then done. Okay, Cypher, lovely. Now you remember 2 plus में PT square planar plus 4 octahedral. All right, Shlok. Good evening, Muskan. How you doing? युवराज सर, क्वेश्चन में तो चेंज पूछना है ना. ज्योमेट्रिकल तो पहले भी था और अब भी है. सो वेयर इज द चेंज? नहीं है ना डूड. ज्योमेट्रिकल कैसे होगा पहले? मैं समझा नहीं. पहले कैसे होगा? व्हाट डू यू मीन बाय पहले ज्योमेट्रिकल होगा?
if you're wondering why I'm looking in and think मेरी आँख की power बढ़ रही है, so I have to like literally go into the screen to read this. ज्योमेट्रिकल कैसे होगा यार, मैं समझा नहीं. NiCl2Br2 में ज्योमेट्रिकल कैसे होगा dude? Can you help me out with that? It's okay we spend time on this, कोई चक्कर नहीं है. हमने आधा घंटा शुरू पहले कर दिया था. It's all right. But can your friends help you out, or if there's something I'm not able to follow that you're asking me, एक बार फिर से पूछ और बताता हूँ. I'll try my best to resolve your doubt. Otherwise, we'll move on, huh? We have a lot of questions to go, but can maybe pick up the speed a little bit, just a tiny little, tiny, teensy bit, maybe. What do you think? What do you think? यार टेट्रा में सिस ट्रांस होता ही नहीं है ना, मैं समझा नहीं यार, टेट्राहेड्रल में सिस ट्रांस कैसे होगा? आई एम नॉट एबल टू फॉलो योर. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट स्टीरियोआइसोमेरिज्म, मेरे सेशन नीचे पड़े हुए हैं, जस्ट चेक इट आउट. ठीक है, अनलेस यू हैव अ स्टीरियो सेंटर, I don't see how that's possible. नहीं, but anyway, stereo that also has to do with optical isomerism, not geometrical तो नहीं होगा ना. देखो यार, क्या नाम है इनका, युवराज, हाँ पूछ रहे थे, युवराज यार, the basic thing needed for you to have say cis trans isomerism, एक दो चीजें हैं. प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, right? That was one of those things. So I don't think it's possible in tetrahedral. If that is the doubt you have, please मेरे सेशन देख लो यार. It'll be difficult for me to talk about right now. I'd like to, but I think that'll go a bit off topic. ठीक है, सिस ट्रांस के लिए वो जरूरी है, वो बाद में कर लेना. खैर, लास्ट वाला पार्ट देखते हैं. I think you already figured it out now. 3d8 4s2 4f14 5d8 6s2 etc etc. ये वीक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, but you've got a 5d thing here, and because of this guy like boss, push the electron. I don't want electrons. Push the electrons out. Too many electrons. बहुत इलेक्ट्रॉन है, देखो कितने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं. And because of that, this also behaves like a strong, I will not call it like a strong field ligand, but pairing हो जाता है. This is an inner orbit. You already know this, right? This dsp2. भाई dsp2 कैसे बनेगा? Unless this d orbital is empty, right? तो d orbital empty है तभी तो बनेगा dsp2. खैर, they're all paired, right? All of these guys are paired. So ये डायमैग्नेट है, ये पैरामैग्नेट है, ये प्रॉपर्टी बदल रही है. ऑलराइट, ग्रुप 17 लास्ट चैप्टर, श्लोक एग्जैक्टली, मैंने वही खोला हुआ एग्जैक्टली वेयर आई एम एट. श्लोक, थैंक यू. श्लोक ने जब तक हम लोग टाइम पास कर रहे थे, इवन फिगर्ड आउट ऑक्सो एसिड के अंदर, दैट्स एग्जैक्टली ऑन वेयर आई एम एट. आई वाज जस्ट लुकिंग एट व्हिच ऑक्सो एसिड इज इट, कहां पे है. खैर, इसका आंसर क्या है? 1 2 and 3. ओह सॉरी, 1 2 and 3. द आंसर इज 3. लेट्स पिक अप द स्पेस अ लिटिल बिट. ओके, अगला सवाल करते हैं. The total number of stereoisomers for the complex CrOX2 ClBr 3 minus, where OX is oxalate, is what? 1, 2, 3 or 4? Oh no! I forgot to change this to. Oh, okay. Anyway, this is supposed to be a numerical entry too. Anyway, ठीक है, बताओ. गलती से हमने options दे दिया आपको, but it's okay. I think these options are quite circumspect, right? It's okay. You will figure this one out. मतलब ऑप्शन देना ना देना इस वाले में इतना हेल्प नहीं करेगा, तो ट्राई इट आउट, मे बी यू विल फिगर इट आउट. पर ऑक्सो एसिड्स, हेलो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स, HOX, HOF, मिल गया. हाँ, so the only exception to the rule, by the way, HOF बनता कैसे है? Since you asking about HOF, guys, आदित्य विक्रम आ गया हो क्या? Since you asked about that, the only way this gets formed is something like this, Cl2, or basically X2 plus water gives you HOX plus HX. ठीक है, तो इसमें होगा -1, इसमें होगा +1. That's it. Cool. That's what this is. Let me quickly read this. HF is really unstable, decomposes to form HF and O2. So अगर ये F होगा, then this becomes HF and O2. That's it. Strong oxidizing agent है. H2O को भी H2O2 बना देता है, etc. etc. It's on page 615 on my book. I can send it to you on. Ping me on IT Chem if you want to know more about this. आदित्य विक्रम. अभी है भी आदित्य विक्रम नहीं मालूम नहीं. बाकी सब लोग बोल रहे हैं 3. C3, okay. 3 lovely. अरे वाह, जब लास्ट वाला सवाल कर लिया तो ये वाला तो आप लोग नींद में भी कर लोगे, है ना? सही है, रेक, युवराज, सबने फिगर आउट कर लिया. लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा अनोइंग था, बट एवरीबॉडी एल्स इज फिगरिंग दिस पार्ट आउट. सही है, बिल्कुल सही बोला.
ये दोनों हो गए, है ना? 615 here too. अरे वाह, ए श्लोक. All right, Aditya Vikram, you're here. Oh, here, that's great. Ping me on IT Scam. I'll send you the, what do you call it, on Telegram or Discord. I'll send you the pic of the page or something, or if you don't have JDL. Anyway, so these are the two broad ways in which this could be, the bonding could look like. And this guy is not going to have any enantiomers. This guy will, blah blah blah, non-superimposable stereo, whatever, blah blah blah. Right? You know this. So answer is 3 because there's 2 of this guy, there's 1 of this guy. 3. Good job. Excellent work. अगला सवाल करते हैं. Match list 1 with list 2. Oh, ये वाला सवाल is funky, bro. Try it out. This one very interesting. If you've done it before, तब भी आपको शायद करने में थोड़ा टाइम लग जाए. अगर नहीं किया लाइफ में, that is very interesting. Try it out. CFSE एनर्जी सीधे दी हुई है. फुल सर्कल, हाँ. वी स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन ऑन दिस. देखो, मैं जो सारे सवाल कर रहा हूं, एक कहानी बन रही है धीरे धीरे. पूरी पिक्चर देने के लिए बैक टू द स्टार्टिंग. जैसे मूवी में होता है ना, क्लाइमैक्स में पहला सीन फिर से यूज होता है. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग नाउ. यूज दैट सेम लॉजिक दैट वी डिड इन द फर्स्ट क्वेश्चन टू डू दिस. बट कैन वी डू दैट? नो, आई डोंट थिंक वी कैन डू दैट. आई थिंक वो करने से ज्यादा सिंपल, देयर इज एन इजियर वे टू डू दिस. देयर मे बी एन इजियर वे टू डू दिस. इतना शायद करने की जरूरत ना पड़े. कृष्ण भाई साहब बोल रहे हैं कि द आंसर इज 3. I'm going to put up 1 notch against 3 over here. Okay, cool. Baki log, what do you think? Okay. Heisenberg, you're from Discord, aren't you? इस सवाल का जवाब बता दे भाई. Did you actually make an account called Heisenberg, or is this the same Heisenberg from Discord? Chris says 3. And Yuvraj says 1. Okay, cool. How are you guys going about this, Yuvraj and Krish? Can you tell me your thought process? ये है strong field ligand, ये है weak, ये है but weak, but then pairing maybe it could fork because 3+ है तो pairing है नहीं हो सकता है. ये भी 3+ है और strong है. ये है tetrahedral और weak. और ये है 2+. So you can go about doing solve only C. Okay, so if you solve only C, C is either 1, 1, 2 or 4. Okay, so C is not 3. Elimination से करते हैं. ये idea मुझे बहुत सही लगा. Solve this. So C is not 3. अरे ये तो बड़ा ज़्यादा हो गया. Hold on. What are we doing? Pen and color is this. Okay, so C not 3. Okay, cool. It's either 1, 4 or 2. See, I can do this qualitatively as well. You solved only C, good job. Shlok says A1, yeah, all right. अब हम लोग इसको qualitatively भी कर सकते हैं, right? आपने शायद quantitatively किया, right? Because I taught you how to do it quantitatively. Qualitatively कैसे करोगे? It depends on strong field, weak charge, and ionic size, right? This whole business of yeah. So this is a strong field ligand. This is weak, but pairing could happen. इसलिए get a little messy. Could happen. I'm not sure about this. This is strong, and this is the smallest, right? The energy here because it's tetrahedral. Why is this the smallest? NCERT खोलते हैं फिर से, right? Let's go back to NCERT and I'll show you. Because कभी-कभी आप लोग मेरी बात believe नहीं करते हो. सॉम देखो, यहाँ पे लिखा है inverted and smaller as compared to octahedral field splitting. ठीक है? So सबसे कम, the smallest will definitely be this guy right here. So out of all of this, सबसे छोटा है D4. No, hold on. D4 नहीं. D3, okay, D3 और D4 के बीच में हो सकता है. So either between this and this, सबसे छोटा कौन सा है? Oh, this is interesting. That doesn't cut it now, does it? If I do this, then I say this could be 4. Wow, that doesn't work, does it? What do we do here? What do we do here? Now, इस तरीके से octahedral field में और strong है दोनों चीजें, that should have the largest value. Octahedral and strong, octahedral and strong, octahedral strong. So out of these two, I'm talking about this or this. सबसे ज़्यादा किसका होगा? This has the highest charge as well. So this probably has the highest one, right? So C should be 2. And you're right. Just by solving C and 2, you get what the answer is. Just by getting this.
The reasoning behind D, I think I got a little caught up, and that's not the smallest. Looks like the smallest one is B and 4. Oh yeah, because इसका तो weak field है, right? Sure, weak field ligand है. Okay, cool. Huh. Shall we move on to the next one? You only solved C. Yeah, exactly. Absolutely, absolutely. Hey Swani, what's up? Long time. Okay, let's move on. यही आंसर है, एलिमिनेट करके फिगर आउट करना है चीजें. बढ़िया बात है. Let's do we have some more time? I think we have spent a bit of time on this. I'll give you one as a homework question. Let's solve a few isomerism questions, right? जो end में थे मेरे, but I don't know if I'll get to them. So let's solve a couple of isomerism questions. Here's this one. The number of रुको, nobody saw that. रुको, I'm going to remove the slide that has the numbers on. Options क्यों है भाई? Options हटाने थे मुझे. That's what I was supposed to do between 6 and 6:30. Remove the options. Khair. All right. I think you've seen this one before. The number of isomers possible for PT, EN, NO2 whole twice. What is this? You didn't see options? That's good. Number of possible isomers for this is what? This one's interesting. You saw? Oh no, King fan saw the options. Oh no. कर ले यार. अच्छा है देख लिया तो. Let's try this question out. We'll do a couple of isomerism questions and call it a day. I don't want to drag it on for too long. These are interesting questions. Interesting questions. Yeah, I'm removing the options for the last one as well that I wanted to. Guys. Okay, we're all set. इसके बाद एक और सवाल करेंगे. Let me call it a day. वो वाला भी आइसोमेरिज्म पे ही होगा. Let's do this. क्या लग रहा है इसका? अरे वाह, किंग फैन सेज 3. अरे ऑप्शन देख लिए तो क्या फर्क हुआ? आंसर दे दो. दैट्स गुड. ओके, ऑलराइट. कुछ लोग बोल रहे हैं 3, कुछ लोग बोल रहे हैं 4. किंग फैन सेज 3, जीशन सेज 3, युवराज सेज 3, पायल सेज 4. और ऑल आइसोमर्स पॉसिबल, नॉट ओनली ज्योमेट्रिकल ना, ऑल आइसोमर्स. हाँ, सब आइसोमर पूछ रहा हूँ मैं. आइसोमर्स इन जनरल. 4 सेज क्रिश, पायल सीज ऑप्शन. दैट्स गुड, अच्छी बात है. ऑप्शन में 4 था ही नहीं. किंग फैन बोल रहे ऑप्शन में 4 था ही नहीं. यार ऑप्शन में 4 था, तुम बोल रहे हो तुम ऑप्शन देखे. ऑप्शन में 1 2 3 4 ओनली यार. आई वाज जस्ट मेसिंग विद यू. ऑप्शन में 4 थे. 1 2 3 4 वर द ऑप्शंस. इफ यू वांट द ऑप्शंस गाइस, डजंट मैटर. एनीवे, देखो, because you have En, life becomes a little bit interesting, because En is just going to be something like this, right? What isomer are you going to form with this, bro? Like, what are you going to do? Is the answer 1? 4 कैसे होगा? शहनवाज, थोड़ा आंसर भी तो दे दे. You've been asking same question from the starting. थोड़ा आंसर भी तो दे दे. युवराज ने पकड़ लिया. श्लोक says 3, NO2 पे डिपेंड करेगा. It's ambidentate. Okay. So अगर NO2 नहीं होता, then the answer would be simply 1. Because what else could I do with this? There's nothing else I can do with this. But because ये है, so I can do all of these things with it. Yeah. Exactly. So there are 1, 2, and 3. What is the fourth one, guys? Yes, linkage ambidentate. Exactly. Yuvraj, NO2, possible answer. Booyah! Good job. NN, NO, OO वाले linkages. Yes, Shlok, Rek, Yuvraj, absolutely right. एक और कौन सा हुआ किंग, बताओ तो, मुझे तो नहीं दिख रहा. Can you like show me? Can you tell me and I'll draw it for you? What is the fourth one, dude? How do we do a fourth one? I'm trying to see a fourth. I really am. I'm not messing with you. What is the fourth one? You got it? मतलब चौथा मिल गया या फिर नहीं है? मुझे तो नहीं दिख रहा चौथा. अगर है तो बता देना. Ping me on I Teach Chem. You know where, on Telegram or Discord. Right? Let's move on. Oh, आपने 3 बोला था. ठीक है.
किंग फैन ने काफी रिट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, कूल, यू सेड विल बी 3, ओके कूल, ऑलराइट, ग्रेट। चौथा मुझे भी नहीं दिख रहा, बट इट्स ओके, ठीक है, द आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी अ नाइस नंबर व्हिच इज 3। नेक्स्ट वन। अरे यार, ऑप्शन अभी हटाए थे, थैंकफुली आज दिख रहे आप लोगों को, बट व्हाट इज दिस ब्रो, अभी हटाए लिटरली, लाइक ओके कूल, इनहेल, exhale. The total number of isomers for a square planar complex M, F, Cl, SCN, NO2 is, बताइए, आखिरी सवाल आज का, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, व्हाट डू यू थिंक? यहां पे दो चीजें देखनी पड़ेगी। दिस इज अ बिल्डअप ऑन द लास्ट क्वेश्चन, पिछले सवाल के ऊपर थोड़ा आगे बढ़ के ही हम लोग कर रहे हैं। बाय द वे, पहली लाइन में लिखा है हाइपोहाइलस एसिड HOF, HOCl, HOBr and HOI are all known and the halogen has oxidation state +1. That's the first line. Yeah. Shlok says 6, Shlok says, Krish says 15, and this is the problem, right? This is the kind of question that comes in JEE Advanced, and you're like, bro, क्या करें इसका? And you can only do this if you know the theory properly. अगर theory थोड़ा सा भी डगमगाई हुई है तो इसको स्किप करना ही बेहतर है। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर +2 एम्बिडेंटेड। श्लोक एक हिंट दूं, क्या? ड्रॉ द बेसिक वंस, ज्योमेट्रिकल और वो सब छोड़ दो। श्लोक, ditch the concept of geometrical. I only have 4, right? This is M, A, B, C, D, whatever, right? That's what this is, है ना? तो इस हिसाब से क्या हो सकता है? We'll talk about ambidentate बाद में बात करेंगे, लिंकेज है। Yeah, Payal again, yeah, exactly. Shahnawaz and Yuvraj saying 12. Okay, cool. Shlok says 6. ठीक. Forget the concept of this whole, whatever. Let's go to, वो कहाँ गया? Hey, where did that message go? Or went away? Okay, doesn't matter. Ambidentate है, good job, you figured that out. Usually ABCD के कितने होंगे? 4 होंगे, sorry 3 होंगे, right? You got this guy right here, this guy right here, and this guy right here. How do I draw this? A, B, C, D, फिर B और C को स्वैप किया, फिर A, B और C और D को स्वैप किया, ठीक है? So go clockwise and then you swap a couple of them out. That's how you get 3. Okay? Cis trans बाद में देखेंगे. Yuvraj Shlok, we'll do this whole cis trans thing later. It's not important right now because you've got this cis trans. हम लोग अभी cis trans is a side effect of this structure, right? That's not important right now. Once you've got this, you have to realize कि let's say B, नहीं C और D है ना, let's say B dash और D dash ये दोनों, right? So if I take B and B dash is say NCS, B is SCN, D is NO2, D dash is ONO. अब देखो क्या करोगे, ये 3 हो गए. Then you'll have one set 3 more where instead of B you have B dash everywhere. Okay, बाकी सब सेम है. Then you'll have another set where instead of B dash you have instead of D you have D dash everywhere, D dash, D dash and D dash, और दोनों डाल लो B dash and D dash. So this way you have 3 times 4 which is 12. Okay, all right. Yeah, cis trans बन जाएगा अपने आप. Cis trans is at this point वो जरूरी नहीं है, because the concept of cis trans तब आएगा when you have like something that's similar or familiar, right? At this point this is how it look like. If you want to see the actual things, let's do that, right? मैंने आपको ये करके दिखाया, right? Now let's write them, draw them all down, right? So you can draw
इसको कर दो, let's do it this way, ठीक है. So here if I do B and D, B and D dash, B dash D dash and D dash D and B dash, ठीक है. Highlighted ones are B and D in orange. मैं yellow में लिख रहा हूँ in orange. Brilliant idea. B D in orange. ठीक है, cool. It's okay, होता है. किंग फैन, यार एक दो सवाल तो मुझे करने दो, तो जेई एडवांस में आ सकते हैं, बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स हियर हु आर स्टिल होपिंग एंड ट्राइंग देयर बेस्ट फॉर जेई एडवांस, सो दिस इज नॉट गोना कम इन जेई में. अगर आ गया देन यू विल थैंक मी, बट नहीं आया तो गाली भी दे सकते हो. आई एम ओके, गाली दे दो तुम लोग. इफ यू आर हियर लिसनिंग टिल नाउ, मतलब ठीक है, यू हैव लर्न समथिंग न्यू. दिस विल हेल्प यू सॉल्व एनी क्वेश्चन विद दिस आइडिया ओवर हियर. ठीक है, कूल. दैट वाज अ नाइस क्वेश्चन, राइट? मुझे तो काफी मजा आया इसमें करने में. यू अंडरस्टैंड, राइट? वी डिड इट स्टेप बाय स्टेप. इसका आंसर होगा 12. ऑलराइट, लेट्स कॉल इट अ डे. काफी भारी हो गया सेशन आई फील, बट कोऑर्डिनेशन है ही ऐसी चीज, शुरुआत करते करते लगता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाय द एंड इट्स लाइक भाई क्या हो गया यहाँ पे, व्हाट्स हैपनिंग, राइट? सो या इट्स ओके, होता है. 4 केसेस, ओके 4 केसेस, कूल कूल, ठीक है, कोई नहीं. चलो मिलते हैं हम लोग फिर ट्यूसडे को. एडवांस के लिए बैठे हैं, दैट्स गुड. स्लो, दैट्स गुड. माय टारगेट इज दैट ओनली, दैट्स गुड. मैं इससे अच्छा नहीं. you're all great. Yes Shahnaz, you're great, you're right. Good job, good job, well done. तो हम लोग फिर मिलेंगे कब? हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे को. एंड in fact let me give you let me let you in on a bit of a secret. ये जो हमारा AI, not AITS, this is mock test, right? जो है हमारा mock test, कहाँ गया? This is the thing, the mock test. Oh, it's right behind me. मेरे पीछे लिखा है सबसे जरूरी चीज. I'm going to slide out of this. Registration successful. Please register for this. Very likely 9th को आएंगे इसके results, and really soon after that we're going to solve them all live. Maybe Wednesday, Thursday को we'll meet and we'll solve this live. So it'll be a fun session. Yeah, we're going to do a nice marathon session, physics, chemistry, maths. So please register for this if you haven't already. And in the following week, if you wanna, chat with us, do the what you call it, 5 sessions with all of us throughout that week, 15, 19. Description में links है, you can check it out. This is a paid course. Full disclosure, right? Okay, anyway, thank you so much. I'll see you on Tuesday. क्या करने वाले हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शंस करेंगे. Have a great weekend. And what are you guys chatting about? बाकी सब था. लास्ट क्वेश्चन भारी था. Okay, cool, great. रेडॉक्स में मिलते हैं. Yes. Which chapter on Tuesday? Oh, Tuesday में ये वाला चैप्टर, पायल. Redox reaction, right at the bottom. You want a homework question? How could I forget? Here is your homework question. The complex with the highest magnitude of crystal field splitting energy is what? Try it out. मिलते हैं हम लोग Tuesday को. Have a great weekend. Bye. Thank you so much for joining this. Tata. Register कर लो यार. Free mock test है. Why would you not take it? Whether you're 11th or 12th, please try it. मजा आएगा बहुत. Bye.